Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Those who all are new, my name is Sonam Rajput and I make videos on makeup, travel, fashion, beauty, lifestyle and much more. And in today's video, we are going to talk about reverse smoky eyeliner look like this. You can see, and I have achieved it only with the help of a Q-tip. Yes, a Q-tip, and you don't need any brush to create this eye look. If you're interested to know how I created this look right over here, then keep on watching and watch till the end. कोई भी part skip मत करना. And थोड़ी सी अच्छी लगी तो do not forget to like, share, subscribe to my channel and hit that bell icon so that you won't miss any of the update of my new video. And yeah, without wasting any more time, let's get into the video. You only need a Q-tip. Yes, a Q-tip. And actually यहाँ से glue निकल गया, but थोड़ी देर बाद ठीक करूँगी after applying the eyeshadow and all on this side as well. So first and the best part of this eyeliner look is that we can achieve it only with the help of one Q-tip. Yes, you heard it right. You only need one Q-tip to draw this smoky eyeliner. You only need this Q-tip and black eyeshadow, but make sure that you are using very little amount of your eyeshadow at once. बहुत ज़्यादा लेंगे ना तो वो आपकी eyes को ना बहुत ज़्यादा पांडा जैसा बना सकता है. बात तो सही है. So I am taking this much amount, बिल्कुल हल्का सा लिया है, and we will try to smoke it on our lower lash line. If you want, you can apply a tape over your lids ताकि एक जो शार्प से विंग आईलाइनर जैसे यहाँ बनी है तो वो बन सके. बट आई couldn't find my tape right here. तो मैं अभी जस्ट उसको बाद में कंसीलर की हेल्प से क्लीन करूँगी. सो यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ द ब्लैक आई शेडो. हल्के हाथ से बाहर की तरफ को पुल करना जैसे हम आईलाइनर को करते हैं. यू कैन सी बहुत ज़्यादा एक ही बारी में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रहा है ब्लैक कलर का. और इसी को ऐसे ही स्मोक आउट करेंगे. इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक्चुअली. और जो ये दूसरी साइड है ना इसकी क्लीन वाली, इससे थोड़ा और स्मच करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लीन सा इफेक्ट आए. You can see how beautiful and sharp it is looking. This literally took just 20 seconds. This is looking so bad right now, but I will just fix this eyelash in a bit. थोड़ा सा मेरा कंसीलर भी खराब हो गया तो उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ. मुझे इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑलरेडी काफ़ी शार्प लग रहा है, बट फिर भी एक शार्प सा इफेक्ट लाने के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर and just blending it with the help of my finger only, and you can see how sharp it is looking. Now I will be taking my black eyeliner. I will just create a very thin line. हमें proper eyeliner नहीं चाहिए because we are doing the reverse eye makeup. Just a little like that, and I'm just drawing the foxy eyeliner ताकि हमारी जो eyes है वो काफ़ी sharp सी लगे. Like this. I will connect it with the eyeshadow, that bold effect. I am just using the kajal, or you can also use any gel eyeliner or a eyeshadow on your waterline. You can just end the look by applying the mascara or the lashes. अगर आप lashes लगाएंगे natural looking तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा वो इफेक्ट. मुझे लैशेस पसंद है पर्सनली, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई लैशेस ऑन टॉप ऑफ इट एंड आई शो यू द रिजल्ट. So this is the final look.